Yes, good morning students. Today we are going to study about the class 9th English movements. Lesson number 7, the last leaf. The last leaf which is written by O. Henry. O. Henry is a famous writer of English, and he was famous for his story, emotional story, and he always used a simple language, and his style is always phraseful. In the story, you find out how a painter saved a life of the young girl or other person who have lost his hope or her hope to alive. मीन्स कैसे एक पेंटर जो है अपनी पेंटिंग के थ्रू जो है किसी भी व्यक्ति की जो है या ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स लाइफ को जो है सेव करता है. इन दिस स्टोरी देयर आर टू मेन कैरेक्टर, सू एंड जॉन्सी. सू एंड जॉन्सी, they were two young artists. They were living in a flat, and Jhansi was suffering from a illness that's name was pneumonia. Now in this story you find out as Sue and Jhansi. Open your book. Sue and Jhansi, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Third story means building, a manzila. First floor, second floor, third floor, or fourth floor means floor. Okay. So they were living third story of an old house. Jhansi fell very seriously in November. In November means where autumn seasons also be entered, जहाँ पे autumn season जो है enter कर चुका होता है, and we suffered from cold and cough or wintering. So here Jhansi fell very seriously in November. She had pneumonia. Their name was pneumonia. Now here she would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. Sue was the friend of Jhansi. She was very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Jhansi's condition. Means doctor come to every day to treat Jhansi, but there were no change in the condition of Jhansi after everyday treatment. प्रत्येक दिन इलाज करने डॉक्टर आता था, और डॉक्टर के आने के बावजूद भी, यानी कि ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो है कुछ दिनों के बाद भी जो है झांसी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ. मीन्स शी वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम pneumonia. Now one day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Jhansi?" No, replied Sue. "But why do you ask?" Means after treatment, doctor find out that there were no change in the condition of Jhansi. So he asked to Sue, "Is anything worrying Jhansi?" Jhansi को कोई ऐसी चीजें जो है क्या चिंतित कर रही हैं? That times Sue replied that no, means in the negation, but she asked again, means Sue asked to the doctor, "Why are you asking such type of question from me?" इस प्रकार के क्वेश्चन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? The doctor said, "Jhansi, it seems has made up her mind that she is not going to get well. If she does not want to lie, medicine will not help." मीन्स एज आई टोल्ड टू यू, जैसा मैंने कहा कि अगर आप में जीने की इच्छा नहीं है तो मेडिसिन आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है. सेम द डॉक्टर रिप्लाइड हियर, इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, अगर वह जीना नहीं चाहती है तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन उसकी मदद नहीं करेगी. Sue tried her best to make Jhansi take an interest in things around her. She talked about clothes,
and fashions, but Jhansi did not respond. Jhansi continued to lie still on her bed. She brought her drawing board into Jhansi's room and started painting to take Jhansi's mind off her illness. She whistled while working. Means she tried everything as painting board, other toys or others during पेंटिंग. सी ऑल्सो विसिल मीन्स बार बार वो जो है विसिल भी करती थी यानी कि सीटी भी बजाती थी, सो दैट द अट्रैक्शन ऑफ झांसी टुवर्ड्स द पेंटिंग और बोर्ड और अदर टॉयज, ताकि जो है उसका अट्रैक्शन जो है बोर्ड की तरफ हो सके. मीन्स सी रिमूव्स फ्रॉम हर माइंड एवरीथिंग दोज आर थिंकिंग, दोज आर वरीड एंड दोज आर फेलिंग इन आर निमोनिया, यानी कि निमोनिया यानी कि जो उसका जो है इलनेस है उससे जो है वह दूर कर सके. सडनली सो हियर झांसी विस्पर समथिंग. विस्पर मीन्स मर्मरिंग, फुसफुसाना या कुछ आवाज करना, धीमी आवाज. She quickly rushed to the bed and heard Jhansi counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After something, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper. Ivy creeper. Ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. Means अचानक थ्रू when she heard the whispering of the Jhansi. जब उसने जो झांसी की whispering को सुनी तो she went near her bed and she heard the reversing counting 12, 11, 9 and so on, and she gazed out of the window where ivy creeper was hanging on the brick wall. जो ईंट की दीवार थी उससे जो है एक आईवी क्रीपर जो है लटकी हुई थी. फ्रॉम वेयर द लीफ वेयर शेडिंग मीन्स एक एक करके क्या हो रही थी, गिर रही थी. व्हाट इज इट डियर शी आस्क्ड. सुने जो पूछी कि यह क्या है. 6 whispered on Jhansi, they are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 left now. उसने बताया कि पहले जो है पूरे टोटल जो है नियर अबाउट जो है 100 लीव्स जो थी बिफोर 3 days, बट नाउ ओनली 5 लीव्स वी लेफ्ट. केवल जो है कितनी है, 5 लीव्स हैं, यानी कि ये बहुत तेजी से जो है फॉलिंग डाउन हो रही है. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Do you know in the geography during autumn seasons, most of the trees left their leaves. अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं या छोड़ देते हैं. और न्यू जो ये जो है चेंजेबल ऑफ द नेचर है, यह जो प्रकृति का परिवर्तन है कि जब तक जो है हम न्यू चीजों को जो है चाहेंगे तो ओल्ड चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा. So that is necessary and that is the changing and rules of the nature. Now it is autumn, said Sue, and the leaf will fall. When the last leaf falls, I will die, said Jhansi with finally. I have known this for the last 3 days. Oh, that is nonsense, replied Sue. जैसे ही Jhansi बोली कि as she replied, when the last leaf falls means last leaf falls, I will die. जैसे ही ऐसे कहते हैं तो वो that is nonsense, यह जो है nonsense जैसी बातें हैं. सुने कहे and what have old ivy leaves to do with your getting well. जो old leaves है उससे और तुम्हारी जो अच्छे होने में क्या जो है संबंध है. The doctor is confident that you will get better. Jhansi did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. उसने जो bowl of soup, एक सूप का कटोरी जो है लाई ताकि जो है उससे जो है वो जो उसको दिया जा सके. So she will get better. वह जो है अच्छी हो जाए. I don't want any soup, said Jhansi. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark.
then I will sleep forever. At the last time, everyone, you have, perhaps you have seen, शायद आप लोग देख चुके होंगे कि at the last time, the man who was not getting better, जो व्यक्ति जो है अच्छे नहीं हो रहे होते हैं या डेंजरस बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो दे डू नॉट लाइक एनीथिंग टू ईट आर टू ड्रिंक, कुछ भी लेना वो पसंद नहीं करते हैं। अगर बुखार से या सिंपल बीमारी से भी अगर पीड़ित हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही सेम जो है सू जो है जॉनसी टोल्ड दैट, वो कही कि आई डू नॉट लाइक टू टेक एनी सूप। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I cannot draw the curtain for I need the light." वह जो कर्टन मीन्स होता है वेल मीन्स पर्दा, ठीक है। तो वह जो है कहती है कि विंडो का जो कर्टन है वो मैं जो बंद करने नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वी हैव टू नीड लाइट, हमें जो प्रकाश की आवश्यकता है। I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. पेंटिंग के थ्रू जो है उन्हें पैसे की आवश्यकता है, तो पेंटिंग वो जो पूरी करने जा रहे हैं। Please my dear means Johnsy. Sue asked to dear indicates to Johnsy. Please my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. वह प्रॉमिस कराते हैं कि ड्यूरिंग माई पेंटिंग के दौरान तुम जो है बाहर नहीं देखोगी। योर अटेंशन टुवर्ड्स ओनली माई पेंटिंग, तुम्हारी जो है ध्यान जो है पूरी कहाँ पे होनी चाहिए, पेंटिंग की तरफ होना चाहिए। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor dried leaves. Means tired leaf means anyone wants to like, कोई भी जो है पसंद करता है go into peaceful, शांति में कोई भी जाना पसंद करता है। अब ऐसे ही जानसी जो है इच्छा करती है और वह कहते हैं कि ट्राई टू एज फिनिश योर पेंटिंग सो दैट आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉलिंग, अंतिम पत्ती गिरने को है उसको मैं देखना चाहती हूँ। Sue said, try to sleep. I have to paint an old miner. I will call Vernon up to my model. Vernon was an old miners art painter. Okay? यही जो है आपका जो है थर्ड कैरेक्टर यू फाइंड Vernon. Lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Vernon. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Rest part will be studying in tomorrow. Okay, thank you.